सो इस वीडियो में देखेंगे कि हम reactjs एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं। उसके लिए आपके सिस्टम पे सबसे पहले आपका node.js इंस्टॉलेशन होना चाहिए आपकी। सो आप node.js की वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। I already downloaded node.js, right? So and then you need you can check here the node installed or not. So you can see, आप देख सकते हैं कि नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम पर, उसका वर्जन 16 है। और यू कैन ऑल्सो चेक npm-v। सो npm वर्जन भी इंस्टॉल्ड है, so both are installed, right? So now we use a command to create the application। हम कमांड यूज करेंगे npx create app create react app फर्स्ट ऐप। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो ये इज मैंडेटरी, इट्स अ कमांड। देन प्रेस इंटर। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। इट इज सेइंग क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप। आप npm create react app से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम एंड नाउ इट इज इंस्टॉल्ड। सो रिएक्ट इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर्ली। सो ये इसके नोड मॉड्यूल्स हैं, सारे ऑल डिपेंडेंसीज आर प्रेजेंट हियर। ये पब्लिक फोल्डर है, इसमें आपके HTML फाइल index.html। ये आपका src फोल्डर है, इसमें आपकी css फाइल, यहाँ पे आपकी app.js फाइल है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फोल्डर है src और पब्लिक। ये आपकी पैकेज और क्रिएशन है, इसमें आपकी डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं। तो आप अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पे डिपेंडेंसी देख सकते हैं। तो ये आपकी डिपेंडेंसीज है पैकेज और क्रिएशन में, आप यहाँ से देख सकते हैं। सो नाउ आप कर सकते हैं cd first app, then you need to type npm start, so it will run the application in the local development server. So now it is running properly. So reactjs is installed properly, and so this is your HTML folder, right? So here it is division it root, it's a main file, and this is your CSS file here, all CSS file here, and this is your JavaScript file here learn React. So if we make some changes kind of here, like h1, we make it here like welcome, we put it a welcome, and now save, and now you can check the website. So it is now welcome. So in this way you can make some changes, and if you want to create a component, so you need to create a component here in src, then you have to import here. In this way you can create a components. So thanks for watching this video. Thanks.